हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्योर शॉर्ट सक्सेस। तो हमने जो जर्नी स्टार्ट करी थी, जर्नी टू 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस इन क्लास 12, उसे आप कंक्लूड करने वाले हैं। हम बुक 1 के बारे में बात कर चुके हैं, बुक 2 के बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ करने के अलावा कुछ और एक चीज रिक्वायर्ड है जो हमें करनी है, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं। ओके, तो देखिए हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की। इंटीग्रल्स की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस बोर्ड्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं इन जनरल। सो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप चैप्टर नंबर 7 में एनसीईआरटी करें प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें। हर चैप्टर के इनपुट्स प्रोवाइड करते हुए मैंने आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चैप्टर 7 में भी बनते हैं। सो हियर आर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, देखिए इंटीग्रल्स में कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपको और करने चाहिए। i इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, देन i इक्वल्स टू न्यूमरेटर में रूट में x प्लस 2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इनटू रूट ऑफ x प्लस 1, फिर i इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर रूट के अंदर x प्लस 1, फिर i इक्वल्स टू tan x माइनस थीटा, tan x प्लस थीटा, tan 2x dx, then I equals to integral 3 to the power 2 log x to the base 3, then I equals to 2 to the power x plus 3 to the power x whole square upon 6 to the power x, then I equals to root के अंदर 1 plus x square upon x to the power 4, then I equals to within root 1 plus sin x by 3, then I equals to integral x to the power 4 plus 1 upon x square plus 1, फिर इसी का रेसिप्रोकल लिखा है। इंटीग्रल्स के और भी क्वेश्चन है जो आपको करने पड़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 100 मार्क्स इन बोर्ड्स। सो हमको स्पेसिफिकली जो चीजें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो आप करिए, आपको पूरा का पूरा पेपर बोर्ड्स में मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, वी हैव गॉट सम मोर क्वेश्चंस टू बी डन इन इंटीग्रल्स। Next is I equals to e to the power x minus 1 plus x to the power e minus 1 upon e to the power x plus x to the power e. Then I equals to 1 upon sin x minus b into cos x minus a. देखिए एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन गिवन है या तो दोनों साइन है या दोनों कॉस है, इसमें एक साइन है एक कॉस है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है सीबीएसई बोर्ड में आपको क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे sin x minus b cos x minus b, और आपको लगेगा एनसीईआरटी ऐसा क्वेश्चन है, उसके तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करें तो वो सिंपल है, साइन इनटू कॉस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। देन नेक्स्ट i इक्वल्स टू dx अपॉन x माइनस 1 इनटू रूट ऑफ 2x प्लस 3, देन i इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 इनटू रूट ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, then I equals to log x upon 1 plus log x square, then I equals to sin 4x upon sin x dx, then I equals to sin x upon sin 3x dx, then I equals to sin 4x upon sin 9x into sin 5x, then I equals to 1 over root sin x root 3 sin x minus cos x, I equals to dx upon sin to the power 3 by 4x into cos to the power 5 by 4x. Some more, I have covered each and every type of questions. That's why I am telling you इसके बाहर boards में question नहीं आएगा. So let's continue. Then we have I equals to 1 upon 3 plus 2 cos x dx. I equals to integral x square upon denominator में x sin x plus cos x whole square. Then I equals to dx upon sec x plus sin x. Then I equals to integral sin of x minus a upon sin of x plus a whole root. Then I equals to minus pi by 2 से plus pi by 2 sin mod x plus cos mod x. Then I equals to 0 to pi by 2 x sin x cos x upon sin to the power 4x plus cos to the power 4x. Then I equals to minus 2 to plus 2 x square upon 1 plus 5 to the power x dx. Then I equals to 0 to 2 pi 1 upon 1 plus e to the power sin x dx. Then I equals to 1 to 3 bracket x minus 1 upon x cube into e to the power x plus 1 upon x dx.
then I equals to integral 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square dx. Now I can assure you that apart from these questions, you will not get any question out of these apart from these questions in the board examinations. So what next? Let's continue with chapter number 8. Let's talk about chapter number 8, application of integrals. I believe application of integrals एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से मोर देन एनफ है, लेकिन उसके अलावा सिर्फ 8 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको, और वो 8 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के साथ एनफ है आपको सीबीएसई बोर्ड में 100 मार्क्स दिलवाने के लिए। कौन से 4 क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हैं? क्वेश्चन नंबर 11th, 12th, 22 and 23 of exercise. Okay, then we have 4 more questions are given you. Find area using integrals bounded by the curves. First है x, y such that y square greater than equals to 4x, 4x square plus 4y square less than equals to 9. NCERT क्वेश्चन है, बस इतना चेंज किया है कि less than equals to की जगह पे greater than equals to है। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट इसको प्लॉट करिएगा और आंसर ऑब्टेन करिएगा। Then y equals to mod of x minus 1, y equals to 3 minus mod x. Then we have find area of triangle formed by positive x-axis, tangent and normal to the circle x square plus y square equals to 4 at 1, root 3. Last question. Again ऊपर लिखा ही हुआ है बाउंडेड कर्व्स के बीच में एरिया निकालना है आपको। y equals to 4a, x equals to 1 and y square equals to 4a square x minus 1. Let's talk about chapter number 9. Let's talk about differential equation. Again differential equation में ऑब्जर्व किया गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने के चांसेस होते हैं। स्टिल क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 100 मार्क्स इन द बोर्ड्स, आई हैव गिवन यू 7 क्वेश्चंस एडिशनल टू एनसीईआरटी एंड दोस 7 क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ। Which questions are there? NCERT एग्जाम्पलर में 9.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11 एंड 27 ये 4 क्वेश्चंस करेंगे आप। इसके अलावा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3 क्वेश्चन और ऐड ऑन करें। y into sin 2x dx minus within bracket 1 plus y square plus cos square x bracket closed dy equals to 0. Then root over 1 plus x square plus y square plus x square y square plus xy into dy by dx equals to 0. Then dy by dx equals to cos bracket में x plus y plus sin bracket x plus y. प्लीज वीडियो में साथ साथ बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट में कुछ और बात करने वाले हैं। ओके, कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 10. लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 10, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सेलेक्टिव करेंगे तो काम बन जाएगा। कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए? रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 9, एक्सरसाइज 10.3 ऑफ एग्जाम्पलर, क्वेश्चन नंबर 4, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 32, 38, 39 and 40. Apart from that कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन करें वेक्टर्स में। If factor a plus factor b plus factor c equals to 0, magnitude of factor a is 4, factor b is 2, factor c is 3, you need to find angle between factor b and c. Then if a, b, c are vectors such that a cross b equals to vector c and b cross c equals to vector a, you need to prove that vector a, vector b, vector c are mutually perpendicular to each other and magnitude of vector b equals to 1 and magnitude of vector c equals to magnitude of vector a. इसके अलावा using vectors prove angle inscribed in a semicircle is a right angle. Then if sum of two unit vectors is a unit vector, prove the magnitude of their difference is √3. 2 more questions of vectors. If vector a, vector b, vector c be 3 vectors such that vector a dot b equals to a dot c equals to 0 and angle between vector b and vector c is pi by 4, then you need to prove that vector a equals to plus minus √2 times of vector b cross c. Then if theta is the angle between two unit vectors a cap and b cap, you need to prove that a cap minus b cap magnitude upon a cap plus b cap magnitude equals to tan theta by 2. So we conclude with chapter number 10. Let's start with chapter number 11. Let's talk about chapter number 11. Chapter number 11 सेकंड बुक का ऐसा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जिसके बारे में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप कंप्लीट एग्जाम्पल करिए, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 मार्क्स की। ओके, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस ऐड ऑन करे इसमें हमने।
Find equation of plane parallel to plane x minus 2y plus 2z minus 3 equals to 0, which is at a unit distance from origin. Then find distance of the point 3, 4, 5 from the plane x plus y plus z equals to 2 measured parallel to line 2x equals to y equals to z. इसका रिवर्स क्वेश्चन भी जरूर प्रिपेयर करिएगा. यहाँ पे पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं प्लेन से मेजर्ड पैरेलल टू लाइन. एक रिवर्स क्वेश्चन करिएगा, पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे लाइन से मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन. ओके, आई हैव नॉट रिटन दैट क्वेश्चन. मैं स्टार मार्क कर देता हूं. अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई विल प्रोवाइड अ क्वेश्चन फॉर दैट. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Find equation of plane containing lines x minus 4 upon 1 equals to y minus 3 upon minus 4 equals to z minus 2 upon 5 and x minus 3 upon 1 equals to y plus 2 upon minus 4 equals to z upon 5. एक लास्ट क्वेश्चन और लिखा है प्लेन में. Find points on the line x plus 2 upon 3 equals to y plus 1 upon 2 equals to z minus 3 upon 2 at a distance of 3 root 2 from the point 1, 2, 3. So let's talk about chapter number 12. Let's talk about chapter number 12. Again chapter number 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. चैप्टर नंबर 12 में एनसीईआरटी कंप्लीट आपको आनी चाहिए. साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ओनली वन क्वेश्चन रिकमेंडेड है, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 15. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एडेड ओनली वन क्वेश्चन टू इट. आप लोगों को करना चाहिए क्वेश्चन ये, और इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, थोड़ा आई कैन टेल यू कि आपका आंसर सही है या गलत है. Then a company produces two types of leather belts A and B. Belt A is superior to quality of B with profit of 2 and 1 respectively. Each belt of type A needs twice as much time needed by belt of type B. If all belts were of type B, company could produce 1000 belts per day. But supply of leather belt is sufficient for 800 belts per day, both A and B combined. Belt A needs fancy buckle and only 400 buckles are available, and for B only 700 are available in a day. 700 buckles in a day. Okay, so find the number of belts company should manufacture to maximize the profit. Let's conclude book 2 by discussing chapter number 13. Let's talk about chapter number 13. एनसीईआरटी कंप्लीट आपको करनी है. अगेन एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 13 में आप सेलेक्टिव कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5. एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन 1, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 24, 29, 35, 36, 40, 43, 44 एंड 47. इसके बाद कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है. अ क्राइम इज कमिटेड बाय वन ऑफ द सस्पेक्ट्स A and B. Initially there is a equal evidence against both of them. In further investigation at crime scene, it is found that guilty party had a blood type found is 20% of population. If suspect A does match this blood type, whereas suspect B is unknown, find the probability that A is the guilty party. Then two integers are selected at random from integers 1 to 11. If the sum of integers chosen is even, find probability that both numbers are odd. A bag contains 4 balls. 2 balls are drawn at random and are found to be red. Find the probability that remaining balls are red. In a set of 10 coins, 2 coins are with head on both sides. A coin is selected at random from this set and tossed 5 times. If all the 5 times the result was heads, find probability that selected coin had head on both sides. Then a coin is loaded in such a way that even number of term is twice likely to occur as an odd number. If the die is tossed twice, find probability distribution of random variable x representing perfect square into tosses. A card is drawn and replaced in an ordinary pack of 52 cards. How many times must a card be drawn so that probability of drawing at least one heart is greater than 3/4?
Now what next? So my dear students, I can assure you sure short success in board examinations, and I can promise you will get 100 marks if you follow all these questions and do them properly. मैंने कुछ कहा था कि मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ. इसी नाम से मार्केट में श्योर शॉर्ट सक्सेस के नाम से सैम्पल पेपर अवेलेबल है, जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं. उसमें बुक 1 के 2 पेपर्स गिवन है, बुक 2 के 2 पेपर्स गिवन है, प्लस चैप्टर आपको प्लस फुल कोर्स पेपर्स गिवन है, ताकि आप प्रिपेयर कर सके अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. सो प्लीज गो ऑन टू परचेज दो सैम्पल पेपर्स, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है कि किस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इन बुक्स को अवेलेबल करवा सकते हैं. So thank you my dear students, do like and subscribe to my YouTube channel, and thank you for all the love and support which you are giving to me. Soon exciting videos are going to follow, wait for them. See you again, thank you.